Islam. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in Quran Majid that وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. If you read the history, you will get to know that Allah subhanahu wa ta'ala sent Hazrat Adam alayhi salam upon this earth. His wish was to convince and to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Nuh alayhi salam came upon this earth. His wish was to convince and to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala with his deeds. Hazrat Yahya alayhi salam came upon this earth. His wish was to convince and to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Nuh alayhi salam, Hazrat Yahya alayhi salam, Hazrat Yaqub alayhi salam, Hazrat Yusuf alayhi salam, Hazrat Isa alayhi salam, every prophet came upon this earth. Their wish was to convince Allah subhanahu wa ta'ala. Every sahabi wanted to convince, wanted to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala. Every wali wants to convince Allah subhanahu wa ta'ala. Every human wants to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala. Even the angels and the malaika wants to satisfy, wants to convince Allah subhanahu wa ta'ala. Whole universe wants to convince and wants to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah subhanahu wa ta'ala states in Quran Majid وَالْفُرْقَانِ حَمِيدٍ that وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. That whole universe wants the satisfaction of Allah tabarak wa ta'ala. But Allah tabarak wa ta'ala wants the satisfaction of Huzur Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. That's why Ala Hazrat Azimul Barakat Imam Ahl Sunnat Imam Ishq wa Muhabbat Shah Imam Ahmad Raza Khan Fazil Barelvi said in Urdu language that Khuda ki raza chahte hain to alam, Khuda ki raza chahte hain to alam, arey Khuda chahta hai razae Muhammad. नात सुनाने लग जाएं, जितने उस्ताद हैं गजलों के ठिकाने लग जाएं, आला हजरत का जो एक शेर सुना दूं जाकर, मीरो गालिब की मेरे पांव दबाने लग जाएं. ये जो सामने लोग खड़े हैं, इलेक्शन पे खड़े हैं, ए भाई हेलो, ये कालीन का इतना शानदार इंतजाम किया है, इसका पैसा भी जाएगा. हाँ, बैठ जाए बड़ी तेजी के साथ. आप खड़े होकर ये दो चार नौजवान खड़े हैं, बिना वजह माहौल खराब कर बैठे, बिल्कुल अदब के दायरे में बैठे. अरे आपको खुशी होनी चाहिए, जिनकी तकरीर आपको समाज सुननी है, वो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल की जीनत में. आप भी बैठ जाए, बड़ी तेजी के साथ बैठ जाए. कोई भी इधर उधर खड़ा ना हो, लगना चाहिए मदरसा इस्लामिया तुर्किया हरियाणा में जलसा हो रहा है. तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस को सजाया जा रहा है. ये जश्न दस्तारबंदी का पुरकाइफ मंजर भी आपको समात करता है. भाई मौलाना गुलाम नबी खुशतल बहुत अच्छा पढ़ रहे थे. अल्लाह उम्र में आवाज में बरकती अता फरमाए. दरमियान में आपने देखा नारों की झंकार में खतीब हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम सुन्नियत की जान हजरतुल अल्लाह हजरत अल्लामा हुजूर सय्यद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ ला चुके हैं. साथ ही साथ मौलाना फखरुद्दीन बरकाती साहिब क़िबला, ये तमाम जिम्मेदार उलमा जलवगर हैं. भाई अली सिद्दीकी जो बहुत अच्छे कलाम पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप उनको समाअत करेंगे. मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो लोग सामने पार्किंग में खड़े हैं, देखिए अपना वक्त खराब ना करें और नबी के जलसे में बैठकर नबी की बातें सुने, नबी की नातें सुने, उलमा इकराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें. इंशाअल्लाह आपके ईमान में ताज़गी पैदा होगी, आपकी नेकियों में इजाफा होगा. लीजिए बड़ी तेजी के साथ प्रोग्राम आगे बढ़ाता हो. सारा मजमा हजरत मौजूद है, हजरत के सामने ताकि बातें लगे. इस इलाके के लोग बहुत अच्छे हैं. जरा दोनों हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह. रब के महबूब की दहलीज पे जाओ इकराम की, रब के महबूब की दहलीज में जाओ. ज़ख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, ज़ख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ. गौसे आज़म से सरे हश्र कहेंगे आका, गौसे आज़म से सरे हश्र कहेंगे आका. जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ. और मेरे आका ने अलम देके ये हैदर से कहा, उंगलियों पे तेरे खैबर को नचाओ जाओ, उंगलियों पे तेरे खैबर को नचाओ जाओ. मैं आपके कानों तक एक आवाज पहुंचा दूं, क्योंकि हजरत की तकरीर सुननी है आपको. फिर इंशाअल्लाह हजरत के बाद उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहिब क़िबला, जिनके कई हजार शागिर्द हैं, उनका भी आपको बेहतरीन खिताब सुनना है. आप जाए नहीं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है हजरत भी स्टेज पर रहेंगे, आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे. वक्त बहुत हो रहा है. इस मदरसा इस्लामिया तुर्किया के प्रिंसिपल माहिर दर्स व तदरीस हजरतुल अल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना आफ्ताब साहिब क़िबला रज़वी तशरीफ
تشریف فرما ہے اور حضرت حافظ محمد شاہد رضا صاحب کے بلا مدرس مدرسہ حاضر تشریف فرما ہے. نیچے وقت بہت ہو رہا ہے, بڑی دلیل کے ساتھ میں 10 منٹ کے لیے مولوی محمد سمیر رضا متعلم مدرسہ حاضر اس ادارے کی محنتیں آپ کے سامنے نظر آئیں گی انشاءاللہ. مولوی سمیر رضا متعلم مدرسہ حاضر یہ انشاءاللہ چنندہ باتیں آپ تک پہنچائیں گے. اس ادارے کے اساتذہ کی محنتیں الحمدللہ رنگ لا رہی ہیں اور آپ کے سامنے رنگ لائیں گی. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. بغیر تابے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات کشتی بحق عثمان خواجہ ہارونی. مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. Dear Ahl Islam, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in Quran Majid that وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. If you read the history, you will get to know that Allah subhanahu wa ta'ala sent Hazrat Adam alayhi salam upon this earth. His wish was to convince and to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Nuh alayhi salam came upon this earth. His wish was to convince and to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala with his deeds. Hazrat Yahya alayhi salam came upon this earth. His wish was to convince and to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Nuh alayhi salam, Hazrat Yahya alayhi salam, Hazrat Yaqub alayhi salam, Hazrat Yusuf alayhi salam, Hazrat Isa alayhi salam, every prophet came upon this earth. Their wish was to convince Allah subhanahu wa ta'ala. Every sahabi wanted to convince, wanted to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala. Every wali wants to convince Allah subhanahu wa ta'ala. Every human wants to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala. Even the angels and the malaika wants to satisfy, wants to convince Allah subhanahu wa ta'ala. Whole universe wants to convince and wants to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah subhanahu wa ta'ala states in Quran Majid wal Furqan Hamid that وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. That whole universe wants the satisfaction of Allah tabarak wa ta'ala. But Allah tabarak wa ta'ala wants the satisfaction of Huzur Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. That's why Ala Hazrat Azimul Barakat Imam Ahl Sunnat Imam Ishq Muhabbat Shah Imam Ahmad Raza Khan Fazil Barelvi said in Urdu language that Khuda ki raza chahte hain to alam, Khuda ki raza chahte hain to alam. Arey Khuda chahta hai razae Muhammad, Khuda chahta hai razae Muhammad. My brothers and sisters, if you read the history, you will get to know that Allah subhanahu wa ta'ala sent Hazrat Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala blessed Hazrat Adam alayhi salam with Mi'raj, but upon this earth Hazrat Yaqub alayhi salam was blessed with Mi'raj, but upon this earth Hazrat Yunus alayhi salam was blessed with Mi'raj, but upon this earth every prophet, every nabi, every rasul came upon this earth. They were blessed with Mi'raj, but Allah subhanahu wa ta'ala blessed them with Mi'raj. But upon this earth, when it comes to Huzur Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, when it comes to his Habib sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, then Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with Mi'raj, but not in the streets of Makkah, not in the streets of Medina, not in the cave of Hira. Allah subhanahu wa ta'ala called him on Lamaka and blessed him with Mi'raj. That's why again Allah Hazrat said that wahi Lamaka ke maki huए sare arsh takht nashi हुए, वो नबी है जिनके है ये मका और वो खुदा को जिसका मका नहीं. वमा अलैना इल्लल बलाग. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की. अच्छी ये जो खड़े हैं ये अपनी बरादरी के हैं, नबी के आशिक खड़े हैं. जितने नबी के आशिक होंगे बैठ जाएंगे. मुझे उम्मीद है नबी का आशिक बैठ जाएगा. इधर भी बैठेंगे. हेलो भाई, बिल्कुल बैठ जाए. उस्ताजुल उलमा की तकरीर आपको सुननी है, आप भी बैठ जाए. आप ये न देखे हजरत आएंगे हम खेल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. बिल्कुल हजरत यहीं पर बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह. प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की. आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की. सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर. पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की. पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह
الحمدللہ کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. یہ بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں خطیب با کمال وائز شیریں مقام مقرر بے مثال حضرت العلام. اور ایک بات بتا دوں الحمدللہ زینت مسند افتاء بقیت السلف عمدۃ الخلف جلالت العلم حضرت العلام حضرت علامہ حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. آپ کو دیکھنا چاہیے بزرگ ہیں عالم بعمل ہیں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اور ہم جوان ہو کے بھاگ رہے ہیں نبی کی محفل نبی کی محفل کو چھوڑ کر اور نبی کے شہزادے کو چھوڑ کر آپ بیٹھے محبتوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی جلیل صاحب قبلہ کی آمد ہے. جتنے ہیں بہت ہیں بس آپ بیداری سے سنیں. بہت جلد انشاءاللہ جلسے کا اختتام ہوگا. کمیٹی والے اور ادارے